अतिथि, विशेष आमंत्रित गण, सभी माननीय अतिथिगण, सहयोगी शिक्षक, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े साथी, एनसीटी परिवार के सभी सदस्यगण और प्रिय विद्यार्थियों, I extend a very warm welcome to each one of you on this auspicious occasion of 32nd Foundation Day of NCTE. It is my proud privilege to extend my heartfelt welcome to our chief guest for today, who will be joining us through a video message, Shri Prahlad Joshi ji, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार. I also warmly welcome our chief guest of the honor, Shri T.K. Anil Kumar ji, Secretary, DOSIL, Ministry of Education, Government of India, who will be addressing us through online mode. Ms. Prachi Pandey ji, Joint Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. My colleague from NCTE, Ms. Sugeet Kaur. आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर चांद किरण सलूजा जी, जो मेरे मेंटर, गुरु और मार्गदर्शक हैं. प्रोफेसर आरपी सिंह जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी. Amongst us, lot of special dignitaries are there. Among them, we have Professor Shripad Karmalkar ji, Director, IIT Bhubaneswar. Professor मजहर आसिफ जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी, चेयरपर्सन, NIOS. प्रोफेसर शशिकला वंजारी जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, नीपा. प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन, हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल. हमारे NCTE का जो 4 मजबूत स्तंभ हैं, पिलर हैं, वो हमारी रीजनल कमेटीज़ हैं. और हमारी रीजनल कमेटीज़ के चेयरपर्सन्स प्रोफेसर HCS राठौर जी, जो किसी स्वास्थ्य कारणों से आज हमारे बीच उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन वो प्रोग्राम को जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं. प्रोफेसर शैलेश जाला जी, प्रोफेसर दिव्य ज्योति महंता जी, डॉक्टर प्रोफेसर मीना राजीव चंद्रावरकर जी, heads of the institutions, principals of the colleges, NCT officers and dear students. साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस राष्ट्र के इतिहास में, क्योंकि आज के दिन 1995 को NCTE का फॉर्मल GB का पहली GB का गठन किया गया था, और इसी दिन को हम हर वर्ष अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं. The foundation of NCTE was with the noble objective of strengthening the quality of teacher education in India. Our last 3 decades, NCTE has been committed to raising standards, reforming policies, and nurturing excellence in the field of teacher education. Foundation Day is not only for celebration, but it is also for reflection. ये अवसर है जब हम अपने 32 साल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं, अपने योगदान को, अपनी उपलब्धियों को, और साथ साथ अपनी चुनौतियों को, अपनी कमजोरियों को, और ये सीखते हैं कि हमें आगे बढ़ते समय कैसे सशक्त रूप में राष्ट्र हित में काम करना है. NCTE का मोटो गुरुर गुरुतमो धामः reflects the very essence of our purpose. It signifies that the teacher is the supreme source of wisdom, knowledge, and values. Guided by the philosophy of the mission of NCTE, which is to prepare teachers who not only impart academic knowledge, but also nurture constitutional values, life skills, and contribute meaningfully to the holistic development of young generation for this country. We are witnessing a transformative era in education with NEP 2020, a visionary reform led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and guided by Honorable Minister of Education Shri Prahlad Joshi ji.
Together, we have driven significant progress in the implementation of NEP 2020, setting new benchmarks for education sector. Now, as we mark 6 years of successful journey of NEP 2020, this policy stands as a turning point in our mission. It emphasizes a robust, flexible, and multidisciplinary education system, which align perfectly with the goals of NCTE. While implementing various programs across the country, we have received valuable cooperation, collaboration, and coordination from different stakeholders, institutions, and experts in this sector. In our policy-driven decision-making, we have also been benefited greatly from the support of Professor Chand Kiran Saluja ji, Professor R.P. Singh ji, our Secretary, respectable Secretary Shri T.K. Anil Kumar ji, Ministry of Education, specifically Ms. Prachi Pandey ji, and all officials, including our Director today sitting here, J.P. Singh ji. NCT has been entrusted with several flagship initiatives that are shaping the future of teacher education for this country. Few of them we all know are ITAP, Integrated Teacher Education Program, which is preparing future-ready teachers, National Mission for Mentoring, which fosters a culture of mentoring by connecting experienced teachers with young educators, National Professional Standards for Teachers, which promotes a continuous professional growth, development, and excellence of teachers. As we celebrate Foundation Day, we reaffirm our collective resolve to strengthen teacher education, empower teachers, and create an enabling ecosystem for their continuous growth. Through our sustained efforts, we remain committed to contributing the national vision of Viksit Bharat 2047. Symbolizing our commitment to the transformative vision, the ITAP has already been commenced from 2026-27 in 409 multidisciplinary institutions across the country that include IITs, NITs, RIAs, central universities, state universities, which are offering ITAP program to approximate 38,000 students across the country. This marks a significant step towards creating a new generation of well-prepared, multidisciplinary, and future-ready teachers for the nation. It is in this spirit that in the second half of today's program, we are organizing a national conference on ITAP. The objective of this national conference is reflection, reform, and future readiness. The conference assumes particular significance. It provides a valuable platform to the institutions to deliberate upon the challenges they have faced in last 3 years and come out and share their innovative practices and institutional experiences to help us identify effective and replicable models for implementation across the nation. The objective is not merely to take stock of the progress made so far, but to collectively learn, reflect, and develop practical strategies for addressing emerging challenges. This transformation in teacher education is part of the larger transformation underway at NCT itself. पिछले वर्षों में हमारी पहचान एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में रही है, जहां हमारा फोकस स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस पर रहा, लेकिन NEP 2020 की दृष्टि के अनुरूप अब हम एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब NCT टीचर एजुकेशन की दुनिया में केवल एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं, बल्कि एक एकेडमिक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को NCT का मोटो समर्थ शिक्षक सशक्त भारत सार्थक रूप से अभिव्यक्त करता है। यह केवल NCT का एक ध्येय नहीं है, बल्कि हमारे कार्य और संकल्प को दिशा देने वाले शब्दों का पुंज है। हमारा विश्वास है कि शिक्षक केवल शिक्षा व्यवस्था का एक घटक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ऐसे कुछ इनिशिएटिव जो अभी हमने हाल ही में लिए, उनमें से कुछ का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा।
उनमें से एक प्रमुख माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी विच इज पार, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू. This significant appraisal part PAR exercise, through which we have undertaken a comprehensive assessment of teacher education institutions across the country to ascertain whether they meet the prescribed norms and standards, as well as processes of which the institutions and academic capacity required to conduct quality teacher education programs. This rigorous exercise has resulted into the closure of approximately 2,500 institutions which were found to be non-compliant with the requisite norms and standards. While this is a significant number, I would like to emphasize that the real achievement lies not in the number of institutions closed, but in the message that this exercise conveys. There can be no compromise with the quality of teachers' preparation. यह एक केवल स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं बल्कि टीचर एजुकेशन को अधिक सशक्त, अधिक गुणवत्तापूर्ण और फ्यूचर रेडी बनाने की तरफ एनसीटीई की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ ऐसे प्रयास किए जो हम आज आपके साथ साझा करेंगे. इन प्रयासों में हमने NMM का एक मोबाइल ऐप और NMM के हिंदी नाम को भारत सरकार की सहायता से मान्यता मिलने के उपरांत आज उनकी घोषणा की जाएगी. NPST का मोबाइल ऐप और उसका हिंदी नाम जो भारत सरकार ने मान्यता दी है. इसके साथ हमारे दो पब्लिकेशन AI in teacher education, artificial intelligence in teacher education, promoting the effective, ethical and responsible use of artificial intelligence in teacher education while keeping the teacher at the heart of educational process. Along with this, NEP 2020 has proposed to have pedagogy for higher education. UGC ने भी इसमें कुछ इनिशिएटिव लिया और NCT being a teacher education body ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया और हम एक दूसरा पब्लिकेशन पेडागॉजी इन हायर एजुकेशन का भी आज आपके साथ समर्पण आपको करेंगे. Together with these initiatives which represent NCT's commitment to building a professional, technology-oriented, reflective and future-ready teacher ecosystem for the country in vision with NEP 2020. At NCT, we are working with core principles that NCT should not remain a regulatory compliance but also become a transformation agent in the field of teacher education. आज मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि NCTE being a public institution आप सबका संस्थान है. शिक्षक शिक्षा से जुड़े किसी भी विषय, विचार या सुझाव का हम खुले मन से स्वागत करते हैं. हमारा प्रयास है कि NEP 2020 के दूरदर्शी परिकल्पना को केवल नीतियों और दस्तावेजों तक सीमित न रखा जाए बल्कि हम सब अपनी अपनी सहभागिता निभाएं और उसे धरातल पर ठोस परिणामों के रूप में परिवर्तित करें. Together with your support, participation and collective commitment, we can build a teacher education system which should help us prepare a generation for Viksit Bharat 2047. At the end, once again, I congratulate each one of us in this auditorium on this 32nd Foundation Day of NCT, and I look forward to your active participation in the national conference scheduled to take place in the second half of the day. Let us move forward with renewed dedication, purpose and unity to shape the brighter future of teacher education. हम सबको NCT के 32वें स्थापना दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद.